Assalamu alaikum. Okay, so let's talk about the lifestyle modification for irritable bowel syndrome. First, let's talk why it is important to know about the lifestyle modification of this disorder. The reason simply is that this disorder is so common that every 1 in 10 person suffers from the symptoms related to the irritable bowel syndrome. वो अलहदा बात है कि 50% से ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो मेडिकल हेल्प जो है वो सीक नहीं करते और वो अपने ही कुछ मेथड्स के ज़रिए इन सिम्टम्स को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड वाइड इस डिसऑर्डर की प्रेवलेंस भी बहुत ज़्यादा है और जहाँ बात की जाए कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स में से 1/3 पेशेंट जो हैं वो फंक्शनल डिसऑर्डर्स ही के साथ आते हैं एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज़ द टॉप ऑफ द फंक्शनल डिसऑर्डर्स के जिसकी वजह से पेशेंट्स आते हैं। फर्स्ट लेट्स डिफाइन के आपके पास इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो आपने कब कंसीडर करना है। क्विकली वी विल गो थ्रू के यू विल कंसीडर समवन इज़ हैविंग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड समवन इज़ below 50 not having any alarm symptoms and most of the time these the patients are females and they are having abdominal pain mainly that is lower abdomen and some episodic related with change in consistency or the frequency of the stool and relieved by defecation and not at the night time. It can be there but most of the time it's not a nighttime symptom and the stress aggravates all of these symptoms. And the other symptoms that are often associated with this disorder are A, B, C. A for abdominal pain, B for bloating, and C for constipation, and sometimes diarrhea is there. So if it is constipation along with abdominal pain and there may be bloating or there may not be, we will call it as irritable bowel syndrome C. It means IBS-C, IBS constipation category. And if it is diarrhea predominant, we will call it as IBS-D. And then there comes a category where this it is often difficult to differentiate between C and D. The symptoms often overlap. Sometimes it is diarrhea and sometimes it is constipation and sometimes it is only mainly abdominal pain. The new guidelines recommend that we always have to classify irritable bowel syndrome after the diagnosis so we can manage it accordingly. So we will not go into the details of the pharmacological drugs in used for this the management used for the management of this disorder. We will stick to the lifestyle modification as it is easier, it is cheaper, and it always helps. So there are little bit modification for different patient. For example, someone is having IBS-C. The some of the dietary advices are general. They are for every patient, and sometimes some of the modifications are more suitable towards one category. अच्छा जी, the first thing is to tell them have the meals on a regular time and takes time to eat. ऐसे नहीं कि जी जल्दी जल्दी आपने खाना खाया फटाफट और जनाब फिर उसके बाद आप काम में लग गए। तो देखें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वी ऑल अर्न टू हैव ए गुड लाइफ और एटलीस्ट टू ईट। वो कहते हैं ना कि पेट अगर साथ ना लगा हो तो आधी दुनिया जो है वो काम छोड़ दे। तो हम कमा ही खाने के लिए रहे हैं तो मेहरबानी करके कुछ टाइम खाने पर लगाया करें। सो टेक टाइम टू ईट देन अवॉइड मिसिंग मील्स और लीविंग लॉन्ग गैप्स बिटवीन ईटिंग। कुछ लोग आकर ये बताते हैं कि हम जो हैं वो क्या करते हैं कि सुबह नाश्ता करते हैं उसके बाद काम में मसरूफ़ हो जाते हैं तो टाइम ही नहीं मिलता खाने का। तो कभी शाम को खा लेते हैं, कभी दोपहर को खा लेते हैं और कभी-कभी खाते ही नहीं हैं। तो दिस थिंग लीड्स टू द वर्सनिंग ऑफ द सिम्पटम्स। तो आपने फिर उन्हें एडवाइस करना है जी कि आपने ज़्यादा लंबा वक़फ़ा खानों के दरमियान नहीं डालना। ड्रिंक एट लीस्ट 8 कप्स ऑफ फ्लूइड पर डे।
तो 8 गिलास पानी के जो हैं आपने कोशिश करनी है कि एक दिन में पिएँ। 8 गिलास का मतलब ये है कि वो या तो पानी के हों तो या फिर जो है वो ऐसी ड्रिंक्स जिनमें कैफ़ीन वग़ैरह बिल्कुल ना हो, उन ड्रिंक्स के 8 गिलास पिएँ। देन रिस्ट्रिक्टिंग द टी एंड कॉफ़ी टू 3 कप्स पर डे। बाज़-औक़ात कुछ लोग 5-5 6-6 कप चाय के पिए जा रहे होते हैं। सो अदर देन आईबीएस स्टिल ये कोई अच्छी हैबिट नहीं है, बिकॉज़ के सब स्टैंडर्ड किस्म की बाज़ारी जो पत्तियाँ हैं, उनके अंदर जो है वो गैस्ट्राइटिस काज़ करने वाले कुछ एजेंट्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह से फिर वो आपको ओवरऑल ही आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। एक तो ये आयरन की अब्ज़ॉर्प्शन को डिस्टर्ब करती है और इसके अलावा इंसान जो है फिर अदर हेल्दी न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस कम यूज़ करते हैं, जिस वजह से फिर बाकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। रिड्यूसिंग द इनटेक ऑफ अल्कोहल एंड फिज़ी ड्रिंक्स, इससे भी कुछ पेशेंट्स जो है वो बेहतर फ़ील करते हैं। इट मे बी हेल्पफुल टू लिमिट द इनटेक ऑफ हाई फाइबर फूड such as wholemeal or high fiber flour and bread, cereals high in bran and whole grains such as brown rice. Next is reduced intake of resistant starch, starch that resists digestion in the small intestine and reaches the colon intact, which is often found in processed or recooked foods. तो यानी आपने ताज़ा खाना खाना है, स्टोर्ड और टिन पैक में जो वो खाने होते हैं उनसे भी अवॉइड करना है और स्टार्च वगैरह से अवॉइड करना। लिमिटिंग द फ्रेश फ्रूट टू 3 पोर्शंस पर डे आल्सो इज़ हेल्पफुल। इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि समटाइम्स कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो छिलका होता है, तो कुछ पेशेंट्स में वो जो है उस छिलके को उतार कर फ्रूट्स का इस्तेमाल भी कुछ सिम्टम्स रिलीव करता है। मैं कुछ यहाँ पर आपसे इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि ये इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि कौन सी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत नहीं, कुछ कौन सी हैं जो वो नहीं करती। बिकॉज़ ऐसा भी होता है, कुछ पेशेंट्स जो हैं वो शुरू में आपको बताएँगे कि येस द मॉडिफिकेशंस वर्क, लेकिन लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम the same lifestyle modification aggravate the symptoms. So try to tailor modifications according to the patients and tell them ke make a diary which foods worsen the symptoms and which foods are helpful. So people with diarrhea should avoid the sorbitol, an artificial sweetener found in sugar free sweets including chewing gum and rings, and in some diabetic and slimming products. People with wind and bloating, जिनको bloating का गैस का ज़्यादा मसला होगा, उनको फिर आपको ओट्स वगैरह से भी फ़ायदा होता है, such as oat based breakfast cereal or porridge and lean seeds up to 1 tablespoon per day. Just add some more practical points to these modifications. With IBS, it is common to have celiac disease. In these subset of patients, avoid gluten as well. And some of the patients also have lactose intolerance with irritable bowel syndrome. Avoid the dairy and lactose containing products as well. So in short, whenever someone is being suspected or being labeled as irritable bowel syndrome, then try to manage them first with lifestyle modification and then add drugs. And sometimes the drug or pharmacological and non-pharmacological management is going on at the same time. We have talked about that how it is important to have regular meals, not skipping the meal, taking 8 glasses or glass of water, limiting tea to 3 cups, adding fibers, avoiding starch, recooked foods, and avoiding sweeteners, adding oats, avoiding lactose and gluten. They all can help. Make a food diary. Okay, thank you. I think this video is going to help all of you in managing the patients. These patients are often resistant to many treatments and lifestyle modification. You can try these one by one. Thank you very much. Like my channel and subscribe as well.